will be given to you. The other facilities are also given to you. So, and all camps are secure and clean camp. You can compare. You go to South Mumbai, go to the Colaba, and after Colaba, once you enter the cantonment, you can change the sea difference. Whether it is hygiene sanitation, whether it's cleanliness, whether it is traffic control, you can see the change. And when we get posted into field area, for example, from here, suppose I get posted to Kashmir or Northeast, where the families are not allowed. That is again a restriction. You can say some of the candidates, when they grow up, they think that throughout the year they want to stay with their families and children. That may not be feasible. And if for these candidates, army is also not a good career who want to stay throughout the year with their family, because there are some requirements, certain areas where families are not allowed. In this case, in this particular scenario, the separated family accommodation is given to the officers. किसी भी सिटी में आपको फ्री एकोमोडेशन चाहिए कैंट के अंदर, सब्सिडाइज एकोमोडेशन, तो वो आपको आर्मी प्रोवाइड करती है जब आप फील्ड एरिया में जाते हैं। फील्ड एरिया में जो बोल रहा हूँ, जो हार्ड एरिया है, जिनमें कि फैमिलीज के एकोमोडेशन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट बस Now status and protocol, as soon as you become an officer, a second lieutenant, when you pass out from the academy, here why I am emphasizing the pass out from the academy, when we join the academy, you don't become officer. When you join the academy, you become gentleman cadet, GC you will be known as gentleman cadets. After the successful completion of training, you passed out as an officer in the rank of lieutenant. When you become lieutenant, at that time you become officer, and your service is counted from that day onwards. So you become, and you are class 1 gazetted officer from the day of commission. You need the highest pay band of central government in 13 years of service, as per 6th pay commission, last pay commission. In 13 years, that is the time you become lieutenant colonel or half colonel you call it. That is the time you come to pay band 4. Pay band 4, when we compare with the central government, it is the highest pay band bracket in the country as far as pay is concerned. And equivalent to IAS and higher to central services, that you must be aware. Next, emolument. And training in IMA or OTA, when I talk about under training also, you get some emolument as a gentleman cadet, like you get 15,000 per month as a stipend during the training. So the time, why I am emphasizing here, the time you get enrolled in officer cadre or in a whichever category, your parents, you don't have to ask for money from your parents. You don't have to worry about the finances, which is generally in lower middle class and middle class is a problem. And you become an independent person from day one, you get enrolled. Officer on commissioning, 35,000 plus, I am saying, because this is you will get gross, which is the basic. When I talk about gross, you will get somewhere close to 50,000 rupees. The gross salary. And again, what all pay and perks, I will be highlighting a separate slide. Within 13 years, he comes to half colonel. Up to 13 years, in 13 years you become half colonel. Up to half colonel or lieutenant colonel, you are promoted time scale with the time in 13 years. But after lieutenant colonel, there are less vacancies, more officers. After every lieutenant colonel, every rank there's a board. So everybody doesn't get promoted after lieutenant colonel. Next, with the basic pay and grade pay, you can see lieutenant to chief of the army staff. You join as a lieutenant, and the last post is the chief of the army staff. And the best part about this organization is that all candidates, all cadets become
has to have joined as a lieutenant, and they have to achieve every rank in the same manner. There is no disparity whether someone is doing well, so he gets promoted fast. Someone is not doing well, he doesn't get promoted fast. It is of course your education standard, your hard work is seen, not only the education part, but where service you are doing, so everything is catered for, and accordingly you get promoted. The promotion policy also very clear, transparent, and same for everyone. So you can imagine where the senior most of the organization has also gone through the same ranks what you will be going through. So he also knows what are the problems, what are the good points, what are the problems in all spheres. Next. Again, when pay allowance, you can see to become pay band 3. Lieutenant comes in pay band 3 bracket, and he achieves in pay band 4 in 13 years. Next, back. All these are allowances you can see, field area allowances per month, 6,700, high altitude allowance, glacier allowance 14,000 per month. You have, once you serve in the glacier, you will be getting 14,000 per month over and above your salary. These are the area specific, where the degree of difficulty is more. You get the flying pay. Suppose you are flying a helicopter, then you will get the flying pay over and above. You para pay, once you paratroopers, flying pay 9,000, so these are some of the area specific. Maximum two field allowances you will be given. Next. Some of the service benefits, entitled rations. Your rationing is free. When I talk about rations, it's all grocery items, the household items, grocery items, not the household items, and your free medical for yourself and for your family. And talk about your family, the family includes your wife, your children, and also your parents if they are not working and they are dependent on you. So they also get free treatment. Whether it's when I talk to my civilian counterpart, they have to pay a lot in getting the insurance policies. And a treatment like chemotherapy, in certain parents I saw, it's damn expensive. And here we have the best of doctors, the best of facilities, best of paramedical facilities in the country, across the country, every city. Canteen facilities, you must be aware of this facility. And leave. This is the only organization which gives you 60 days of annual leave and 20 days of casual leave in a year. And this 80 days of casual leave, 80 days of leave in a year is paid leave. You are not deducted. You go to the corporate, if you ask for more than 10 days, they start deducting your pay. Your pay is not deducted. So it is 80 days of paid leave you are given as an officer's card. And you get 90 days leave in JCO card. Furlough up to 1 month. Furlough means this is over and above. If you are through with the annual leave, still you have some medical problem with your parents and you want to take more leave, this furlough is nearly half pay. And encashment of 300 is the same for the central government, I believe. And study leave, I told you to get the study leave once in a service package. It is also paid. Other privileges, furniture, electricity at nominal minimum rates, conveyance of allowance or baggage transfer, whenever you transfer you will be paid for that also. Life insurance covers, this is something in officer's life cover is more than the monument. When I calculate it is gross nearly 60 lakhs plus. When something happens then we know more, his family gets paid this much of money. Household
transport, computer knowledge is different. We have an organization in the Army Group Insurance Fund. Army Group Insurance. So this branch handles all your loans. You want to take the loan, within the organization you get either the housing loan, or you get the car loan, or you get the computer loan. So that facility is also available. Next. That is how you can compare with Army and corporate. आप कंपेयर कर सकते हो. आर्मी में पे ठीक है, कॉर्पोरेट में भी है एक्सीलेंट पे, बट एक्सपेंसेस ये मैं थोड़ा कंपेयर किया है क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट. अभी मैं एंट्री सिस्टम पे आता हूँ 10+2 लेवल के ऊपर. तो स्पेशली जो बच्चे 10+2 लेवल के ऊपर, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आर्मी में फैसिलिटीज क्या है. और ये सभी एंट्री लेवल्स एक ही साइट है जो ऑफिसर्स भी JCO द्वारा भी उस साइट के ऊपर जा सकते हैं. www.joinindianarmy.nic.in. आपको सारी इंफॉर्मेशन अभी अगर आप नहीं भी देख सकते हैं और आप दूसरे कैंडिडेट्स भी देखना चाहते हैं, इस साइट के ऊपर जाइए. इंटरनेट पे कहीं पे भी अपना साइट खोलिए और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी एंट्री सिस्टम एलिजिबिलिटी, अपना एलिजिबिलिटी चेक कीजिए. नोटिफिकेशन अखबार में भी आता है और आप ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर्स का. जब भी आपको जो एंट्री है, एंट्री का मंथ आएगा और आप ऑनलाइन उसको रजिस्टर कर सकते हैं. आपके पास कॉल लेटर आएगा एंट्री बेस के ऊपर और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा. तो 10+2 लेवल की एंट्रीज है हमारे पास. 12वीं के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो. बट 10+2 लेवल खाली मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है अभी तक. 10+2 लेवल ग्रेजुएट लेवल के पास हमारे पास परमानेंट कमीशन भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन. परमानेंट कमीशन का मैं बात करता हूँ कि आपको कंपलसरी 20 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी. जब मैं शॉर्ट सर्विस की बात करता हूँ तो आपको कंपलसरी 10 साल की नौकरी पड़ेगी. वुमेन स्पेशल एंट्रीज है लेडीज़ के लिए, और टेक्निकल एंट्रीज है जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स या जो PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में फाइनल ईयर में है या उन्होंने ग्रेजुएशन कर दी. नेक्स्ट. सो ये जब मैं बात करता हूँ खाली 12th लेवल की एंट्रीज की, तो सबसे बड़ी एंट्रीज, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमारे पास है जो एंट्री हो नेशनल डिफेंस एकेडमी की, जिसका नाम सभी को पता होगा. ये एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी हमारी पुणे में है. और आप इसके लिए इस एंट्रीज का ये आप एज देख सकते हो, एजुकेशन स्टैंडर्ड देख सकते हो, नोटिफिकेशन आप देख सकते हो. इस एंट्री के लिए एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराता है. तो मैं एंट्री वाइज की डिटेल में बात करता हूँ. नेक्स्ट. बैक एक दूसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम. इसका भी आप एज 16.5 से 19.5. 10+2 PCM is 70%. Now here you can see. नेक्स्ट. अभी हम ग्रेजुएट लेवल में हमारे पास एक डायरेक्ट एंट्री है जो कि आप पास आउट होंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से, और TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और UES यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम. ये डिफरेंट एंट्री लेवल है. हर एक कैंडिडेट कहाँ फिट आता है अपने आप में, या वो एक से ज़्यादा में अप्लाई करना चाहता है, वो अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जैसे मैंने बोला, आप साइट पे जाइएगा और उसके बाद साइट पे जाने के बाद आपको सारा पता चल जाएगा. और दूसरी एंट्री SSC मैन नॉन टेक्निकल. नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में फ़र्क ये है कि नॉन टेक्निकल का मतलब है कि आप उस आर्म में हो जिसमें टेक्निकल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं होती. जैसे कि मैं इन्फेंट्री में हूँ तो इन्फेंट्री इज नॉन टेक्निकल. टेक्निकल आर्म्स जैसे कि सिग्नल हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि EME हो गया जो कि हमारा गाड़ी का रिपेयर, हर चीज़ का जिसमें टेक्निकल साइड चाहिए, जो सपोर्ट है,
जो कॉम्बैट आर्म है उसके लिए आपको टेक्निकल बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम कॉम्बैट का है, लड़ाई का। तो इसीलिए बोला हर आदमी के लिए, हर कैंडिडेट के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एंट्री सिस्टम है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम बड़े हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता है कि एंट्री कम से कम 12 से ज़्यादा एंट्री पॉइंट है आगे में जाने के। दूसरा एसएससी वुमेन, ये लेडीज के लिए है, गर्ल्स के लिए है, बेसिकली नॉन टेक्निकल। इसमें उम्र आप देख सकते हो 19 से 25 साल है, ग्रेजुएशन है, और साल में हर एंट्री का हर 6 महीने में नोटिफिकेशन आता है, हर अखबार में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कंपलसरी आता है। और अभी तो आप ऑनलाइन भी आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, आपको फॉर्म भरने का वो चक्कर ख़त्म हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी अभी आप, जैसे मैंने समझाया पहले कि joinindianarmy.nic.in पे जाओ, अपना सारा काम वहाँ भी कर सकते हो। अगला एसएससी मेन टेक्निकल, यहाँ पे हमारे को इस एंट्री में इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत है। जिनके पास ऑलरेडी बीटेक या कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री ले है जिनके पास, वो